and is a co-partner in father's joint family property. Though such right is given to the daughter from her birth, but the benefit of it can only be taken from 9/9/2005. Though slight retrospectivity is allowed from 2012-2004. With the amendment, the doctrine of survivorship also has been done away with, wherein the property of the joint family remains in the hands of male co-partners after any death of a male co-partner, and such alive co-partners hold the property as tenants in common and not as joint tenants. Now the daughter have been made a co-partner. Thus, if any co-partner dies in a family, the property is not devolved as per survivorship. Rather, notional partition has to be done, whereby the share of the deceased in a co-partnerly property is evaluated and then it's divided as per the intestate succession as per section 8 to 10 of the Act, as was held in the case of Uttam Singh versus Saubhag Singh 2016 Supreme Court. The only catch is that in order to apply the benefit of section 6, the death of a co-partner in upper generation should take place after the commencement of the Act. If the death had already taken place before the Act, then the property would be divided by survivorship and not by notional partition, as was held in the case of Prakbash versus Fulbati. Thus, it can be said that though the right of a co-partner is granted to a woman from the birth, but she can take advantage of it only from after the commencement of the act and not before it. अब मैंने ये इतना सारा इसलिए पढ़ा आपको ताकि आपको पता चल जाए कि शॉर्ट जो आंसर है उसको कैसे इलेबोरेट किया जाता है. कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड आंसर लिखोगे तो अपने आप इलेबोरेट होता रहेगा, क्योंकि पता रहता है कि हमने क्या लिखना है, सबको ही पता होता है. बस इसमें ये है कि पर्पस हर क्वेश्चन में पर्पस ज़रूर मेंशन करना. इंटरलिंकिंग कॉन्स्टिट्यूशन से तो ज़रूर बिल्कुल ही करना. अब ऐसे ही एक लिमिटेशन लॉ का क्वेश्चन है, वो भी डिस्कस कर लेता हूँ, वो भी एक नोट की तरह है. अब क्वेश्चन ये है कि शॉर्ट नोट है, एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑन विच लिमिटेशन एक्ट इज बेस्ड. इतना क्वेश्चन. अब इसको मैं कैसे डील करता हूँ आप ये देखिए. लिमिटेशन एक्ट इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम. अब ये बात है कि जहाँ कहीं मैक्सिम पता है ना उसको ज़रूर लिख देना, एक्स्ट्रा मार्क्स ज़रूर लिख देना. लिमिटेशन एक्ट इज बेस्ड on the maxim interest republicae ut sit finis litium, which means that interest of state lies in bringing an end to litigation, because if a matter is kept hanging for infinite time, it will result in rendering an evidence stale and result in uncertainty in legal relations. Limitation act is also based on the maxim vigilantibus non dormitibus juris subveniat, which means that law protects the right of those who are vigilant and those who don't slumber upon their rights. Thus, it can be said that Limitation Act has both public purpose and individual purpose. ये purpose में इतना मैंने concept बताया सारा. In order to serve both the purpose, Limitation Act does the balancing of interest between both the plaintiff and defendant by providing limitation period. Act goes in the favor of a defendant that it considers that matter should not be kept hanging for a continuous period of time, and there has to be certainty in legal relation. On the other hand, Limitation Act provides for exception under 4 to 11 and exclusion 12 to 24, which goes in favor of the plaintiff, which considers that despite the limitation period is over, still the plaintiff is allowed to file suit if his case falls in exception or exclusion. Thus, by following the above principle, Limitation Act serves the larger constitutional purpose of equity, justice and good conscience. अब वही लाइन मैंने बताया था कि जहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा, इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसेंस डाल दो, एंड द प्रिंसिपल इंश्राइंड इन द प्रीएम्बल सोशल जस्टिस डाल दो. That is social justice. That is when a party is when a party have a legal relation with respect to his right or property is certain, it gives sense of security to such party. अब social justice से इसलिए related है क्योंकि when a party has a when parties legal relation with respect to, अब पार्टी का कोई लीगल रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू उसकी प्रॉपर्टी अगर क्लियर हो जाए, क्योंकि
कि लिमिटेशन एक्ट की वजह से जल्दी सूट फाइल होगा, लिमिटेशन अगर बाहर होगी तो राइट इम्परफेक्ट राइट हो जाएगा, तो परपेचुटी के लिए मामला है हमेशा हैंगिंग नहीं हो जाएगा। तो इसलिए सोशल जस्टिस द वर्ड विच इज़ इन द प्रीएम्बल उससे भी रिलेटेड है, एक तरह से सोशल जस्टिस भी है टू द citizens of the country or to the person who are living in the country. Then again, Limitation Act is based largely on the principle of laches, that is reasonable delay, that is anything which is raised after expiry of a reasonable delay is barred, and such reasonable delay has to be decided in facts and circumstances of each case. But in the case of Limitation Act, such reasonable delay has been decided by the Parliament itself. लिमिटेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई ऑन द रिट्स बट प्रिंसिपल ऑफ लैचेज अप्लाई ऑन रिट्स। अब इसमें मैंने लिमिटेशन बता दी लिमिटेशन एक्ट का कि जो लिमिटेशन एक्ट है इट डज नॉट अप्लाई ऑन द रिट्स, बट द प्रिंसिपल ऑफ जो लैचेज है, प्रिंसिपल ऑफ लैचेज है जो ब्रॉडर प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे लिमिटेशन एक्ट बना है। मतलब लिमिटेशन एक्ट एक छोटा सा पार्ट है प्रिंसिपल ऑफ लैचेज का। प्रिंसिपल ऑफ लैचेज को हम अप्लाई कर सकते हैं रिट के ऊपर, लिमिटेशन एक्ट डायरेक्टली रिट पे अप्लाई नहीं होता। ये हमने लिमिटेशन बता दी, जैसे मैंने बताया था ना कि लिमिटेशन बता दो। अब इसमें मैं इलस्ट्रेशन बता सकता था, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन करके डिफाइन कर सकता हूँ। अब वही है कि आंसर जितना मर्जी बड़ा करी जाओ, पर टाइम लिमिट में जल्दी ख़त्म करना और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मेंशन करना इम्पॉर्टेंट रहता है। तो इसलिए इतना भी बड़ा आंसर मत लिख दो कि टाइम ही ख़त्म हो जाए सारा।